हेलो अगेन एंड वेलकम बैक टू बीइंग सिग्निफिकेंट। मैं हूं रोहित और आप सभी का इस सेकंड एपिसोड में स्वागत है जिसमें हम आर्ट लैंग्वेज कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले एपिसोड में या पिछले वीडियो में हमने देखा कि हम आर को कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो क्या होता है एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स अराउंड व्हाई डू वी नीड टू लर्न आर। हम कोई और लैंग्वेज क्यों नहीं सीखना चाहते, या ऑब्वियसली आप सीख सकते हैं बट आर के एडवांटेजेस क्या हैं वर्सेस एनी अदर लैंग्वेज। सो ऑल दोज थिंग्स वी कवर्ड दिस इन दिस वीडियो। हम अपना पहला प्रोग्राम लिखने वाले हैं एंड वी विल बी कवरिंग सर्टेन थिंग्स लाइक हम एक फाइल को कैसे रीड करते हैं, हम एक वर्किंग डायरेक्टरी कैसे सेट करते हैं एंड सम बेसिक फंक्शंस अराउंड हाउ टू कैलकुलेट मीन, मीडियन एक्सेट्रा। सो चलिए शुरू करते हैं। तो असल में अगर मैं बहुत ही सिंपल भाषा में आपको बताऊं कि आज हम क्या करने वाले हैं, तो वो बस इतनी सी बात है कि हमारे पास सैम्पल फाइल्स हैं जो एक्सेल या सीएसवी फॉर्मेट में हैं, जो जिसको अगर हम ओपन करेंगे एक्सेल में तो कुछ ऐसी दिखती है। हमें बस करना इतना है कि इस फाइल को आज हमें आर स्टूडियो में खोलना है, बस सिर्फ इतना और कुछ भी नहीं। तो अब हम अपनी एक्चुअल फाइल्स के साथ काम करना शुरू करेंगे। तो उसके पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी कि फाइल तो जो है वो असल में हमारे सिस्टम पे है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास दो फाइल हैं, sample1 and sample2. They are on my laptop right now in the hard disk drive space. So ये कंप्यूटर पर हैं बट दे आर नॉट इन माई आर एनवायरनमेंट। तो मेरा पहला स्टेप या ये पहला पर्पस ये होगा कि मैं उसको अपने आर एनवायरनमेंट के अंदर ला सकूँ। सो फॉर दैट आई एक्सप्लेन यू समथिंग, प्लीज़ फॉलो दिस। तो लेट्स से आई हैव the hard disk drive space for me where my files are located, the working directory in a way. So the working directory, so this is where my sample1 and sample2, these two files are located. और अभी एक मेरे पास R environment है which is my R Studio software where I need to bring this. So these two environments are needed to interact with each other, कि ये बता सकें कि ये फाइल यहाँ है, उसको आप यहाँ लेके आओ, उसको स्टोर करो, उस पर काम करो। सो फॉर दिस टू हैपन आर स्टूडियो को हमारे सिस्टम को कुछ बोलना होगा, कुछ बताना होगा जिससे वो समझ सके कि ये फाइल इस लोकेशन पर रखी हुई है, आप इधर जाओ और उसको फेच करके यू ब्रिंग इट बैक टू आर एनवायरनमेंट। और जब वो आर एनवायरनमेंट पे आ जाए वील हैव टू टेम्पोरेरली उसको स्टोर करना होगा आर एनवायरनमेंट में। प्लीज़ नोटिस आई एम यूजिंग द वर्ड टेम्पोरेरली, क्योंकि जैसे ही आप आर स्टूडियो बंद करेंगे इसकी खुद की अपने पास मेमोरी नहीं है। सो इट विल रिलाई ऑन द सिस्टम्स मेमोरी, so the files will not stay there forever in the RStudio environment. So it will temporarily come, and then once we work on it, it will, and if we when we close the RStudio environment, it will go away. So for this to happen, हमें कुछ बताना होगा सिस्टम को RStudio के थ्रू कि आप इस लोकेशन पर जाएं। लोकेशन इज द कीवर्ड where this file is kept and bring it back. तो now we'll switch to our R environment। और यहाँ पर जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि अभी हमने बताया कि हमें इसे बताना होगा कि वो लोकेशन क्या है जहाँ पर ये फाइल रखी हुई है। सो जब बताना होगा इज़ लाइक अ कमांड जिसके लिए द सेट फंक्शन विच इज़ कॉल्ड सेट wd। तो आप नोटिस कर रहे होंगे जैसे मैं लिख रहा हूँ इट हैज स्टार्टेड टू सजेस्ट मी फ्यू ऑप्शंस। तो सेट wd इज़ द कमांड और द फंक्शन विच आई पास। और अगर मैं टैब पे अपने लैपटॉप में क्लिक कर दूँ इट विल कंप्लीट दी एंटायर कमांड फॉर मी। तो आप एक चीज़ नोटिस करें कि यहाँ पर जैसे मैंने ये लिखा इट वॉज आस्किंग मी फॉर अ पैरामीटर। तो एक फंक्शन के अंदर अगर हम कुछ भी पास करते हैं उसको हम पैरामीटर बोलते हैं कि ये एक पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट ले रहा है या एक पर्टिकुलर पैरामीटर इट विल टेक। सो सेट wd अपने अंदर वो लोकेशन लेता है वेयर
it is supposed to look for those files. And also because we are setting the working directory, तो हम कोई भी interaction करेंगे वो हर बार इस लोकेशन पर जाकर अपनी फाइल्स को एक्सेस करेगा या चेक करेगा। तो ये फंक्शन सिर्फ हमें एक बार लिखना होगा अनलेस हम अपनी वर्किंग डायरेक्टरी चेंज करना चाहते हैं। तो अब हमारा अगला स्टेप है इज टू फाइंड दैट लोकेशन। तो इसके लिए आप उस फोल्डर पे जाएं जहाँ पर आपने इस फाइल को सेव कर रखा है या फाइल्स को सेव कर रखा है। तो आप जब अपने फोल्डर पे जाएंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरी फाइल्स हैं, एंड if you observe above and if I'll click here it will convert this entire thing into the path, and if I'll copy this, फिर इसको कॉपी करने के बाद मुझे अपने R environment में वापस जाना होगा और अब यहाँ पर मुझे इस पाथ को इसके अंदर पास करना होगा इन कोट्स। सो आई पुट कोट्स फर्स्ट, डबल कोट्स या सिंगल कोट कुछ भी यूज कर सकते हैं आप, एंड आई पेस्ट इट। तो नाउ इट हैज कम हियर। एक कैच है इसमें, ये जो बैक स्लैशेस आप देख रहे हैं ये आर रिकॉग्नाइज नहीं करता एज अ पाथ। सो व्हाट आई नीड टू डू इज कन्वर्ट दीज बैक स्लैशेस इनटू फॉरवर्ड स्लैशेस फॉर इट टू रिकॉग्नाइज दिस एज अ पाथ। सो वंस आई हैव डन इट, देयर इज अ बटन, अगर मैं इसके एंड में अपना कर्सर रख दूं और या फिर इसको सिलेक्ट भी कर सकता हूँ, बट आई प्रेफर इसके एंड में मैंने अपना कर्सर रखा। देयर इज अ बटन कॉल्ड रन। इफ आई प्रेस दिस बटन, या फिर जैसा वो हिंट में सजेस्ट कर रहा है कि आप कंट्रोल एंटर भी प्रेस कर सकते हैं, देन इफ आई डू दैट, आई एम प्रेसिंग कंट्रोल एंटर, यू विल सी इन द कंसोल जहाँ पे रिटर्न आउटपुट मेरा प्रोड्यूस होता है, दिस कमांड और दिस फंक्शन हैज रन। तो नाउ यूल नोटिस कि दिस पाथ हैज बीन सेट नाउ, बट टू बी डबली श्योर what I'll do, I'll see whether the path has been set correctly or not. So ये पता करने के लिए there's another function which is called getWD, which stands for get the working directory, और ये अपने अंदर कोई argument नहीं लेता है unlike setWD. And if I'll run this by pressing Control Enter or I can click here, it will in the console part show me the path where my working directory has been set to. ठीक है, तो अब हमने अपनी वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर दी है, हमने बता दिया है कि वेयर आर फाइल्स आर लोकेटेड। नाउ देयर कम्स द अनदर पार्ट कि अब हमें एक्चुअली उन फाइल्स को रीड करना है। और जैसा कि मैंने पहले बोला था कि हमें उसे टेम्परेरीली एक ऑब्जेक्ट या एक कंटेनर के अंदर रखना होगा ताकि हम उस पर फर्दर काम कर सकें। तो अभी हम वापस अपने फोल्डर पे चलते हैं और अपनी फाइल्स को ऑब्जर्व करते हैं। तो अब अगर आप देखेंगे मेरे पास दो फाइल्स हैं, और जो ज़रूरी चीज़ है यहाँ पर नोटिस करना इज़ द टाइप। व्हाट टाइप ऑफ फाइल एम आई वर्किंग विद, दिस इंफॉर्मेशन इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। तो अगर आप sample1 फाइल को देखेंगे, द फाइल टाइप इज़ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, या जिसको हम CSV भी बोलते हैं, एंड द अदर वन इज़ एक्सेल वर्कशीट विच इज़ नथिंग बट जो हमारा एक्सेल की फाइल होती है वो होती है। So if let's say I'll open this and I'm opening the CSV file, both have the same data, it's just that उनका type अलग है। तो for the sake of understanding I'm opening it for you। तो अगर आप इसको देखेंगे तो मैंने इस डेटा को जो हमने यूडाइस में देखा था, जो कि हमारा प्रोफाइल वाला पार्ट था, उसको सबसेट किया हुआ है। When I'm saying सबसेट किया हुआ है, उसका मतलब ये है कि मैंने पूरे ऑल इंडिया लेवल के डेटा को ना लेते हुए केरला और कर्नाटका का डेटा यहाँ पे लिया हुआ है। तो इफ यू सी दैट स्टेट के अंदर सिर्फ केरला और कर्नाटका आ रहा है। सो आई एम नॉट वर्किंग विद द एंटायर ऑल इंडिया लेवल फाइल, बट रादर विद जस्ट द केरला एंड कर्नाटका स्टेट फाइल्स, एंड दैट टू मेरा टाइप या मेरा फाइल कौन सा है, जो प्रोफाइल था स्कूल प्रोफाइल, वो वाला फाइल मैंने लिया हुआ है। सो नाउ अगर आप देखेंगे कि दिस इज द फाइल विच आई ट्राई टू ब्रिंग इन माई आर स्टूडियो एनवायरमेंट। तो अब हम वापस अपने आर स्टूडियो एनवायरनमेंट में आएंगे एंड वील ट्राई टू रीड दैट फाइल और वील ट्राई टू ब्रिंग दैट फाइल ओवर हियर। सो हमारी लोकेशन सेट है और बस अब हमें उस फाइल को रीड करना है जो हमने sample1 देखी। तो जस्ट रिमेंबर दैट फाइल वाज CSV फाइल। सो वी हैव अनदर फंक्शन in R which is called read.csv. So if I press tab it will take it. अगेन आप नोटिस कीजिए कि जो येलो कलर में आपके पास हिंट आ रहा है, वहाँ पे सर्टेन पैरामीटर्स इट इज़ आस्किंग फॉर।
इट इज सेइंग कि वो फाइल का नाम क्या है. Header is nothing but whether I have the first row as my titles of each column or not. Separator is nothing but what separator is being used. So हमारे केस में it will just be comma, and there are some more fields which are not really important for us. Function जो है वो जो पैरामीटर्स ले रहा है, हमें ज़रूरी नहीं कि हमें सारे पैरामीटर्स ही पास करने, जो भी मैंडेटरी पैरामीटर्स हैं वो हमें पास करने हों. और ये समझने के लिए कि ये फंक्शन कैसे काम करता है, आई कैन जस्ट hover over this function and I can click F1 on my keyboard. कुछ नए तरह के कीबोर्ड्स जो होते हैं, नए तरह के लैपटॉप्स होते हैं, उसमें एक फंक्शन बटन के साथ शायद आपको दबाना पड़े F1 की, बट यू कैन सी दैट. सो जैसे ही मैंने F1 दबाया, सो इट हैज़ क्रिएटेड अ हिंट फॉर मी. सो आई नीड टू लुक फॉर रीड CSV. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रीड CSV इज द फंक्शन. फाइल हेडर will go further below, the arguments or the parameters it is taking, it is talking about that. तो अगर आप फाइल देखेंगे, फाइल इज द नेम ऑफ द फाइल विच नीड्स टू बी रेड, तो ये आप समझ पाएंगे. एंड हेडर इज द, तो बाय डिफॉल्ट अगर आप हेडर पास ना करें तो हमारा इस पर्टिकुलर फंक्शन में जो मैंडेटरी फील्ड है वो दैट इज द नेम और द पाथ ऑफ द एंटायर फाइल. तो पाथ क्योंकि हमने ऑलरेडी सेट कर दिया है, हमें बस यहाँ पे उसका नाम पास करना पड़ेगा, एंड दैट टू विद इन कोट्स नाउ. सो हमारी फाइल का नाम जो था वो था sample1. तो दिस इज द नेम विच आई हैव गिवन, बट इसके साथ मुझे उसका टाइप भी पास करना पड़ेगा. तो उसका टाइप था .csv. तो उस फाइल के नाम के एंड में मैं उसका एक्सटेंशन देता हूँ. एक्सटेंशन से मतलब है वो फाइल का टाइप क्या है. नाउ दिस अनदर argument for me, which is header is equal to true. So when I'll do this, I'm saying it to R that the file which you are going to read has a header in it. The first row which is present in my file is the header of the file. Header means जो भी हर कॉलम का एक टाइटल होगा वो उसमें प्रेजेंट है. So if I'm passing header as true, it will honor my first row and consider my first row as the header of my entire file. अगर मैं ये आर्ग्यूमेंट पास नहीं करता तो इट विल बाय डिफॉल्ट टेक माई हेडर एज ट्रू. सो इवन इफ आई एम नॉट डूइंग दिस इट विल पास माई हेडर एज ट्रू. थोड़ा सा इट माइट बी कंफ्यूजिंग यू, तो हम देखते हैं इसको. तो इफ आई रन दिस नाउ, अगेन मैंने अपने कर्सर एंड में रखा एंड आई प्रेस कंट्रोल एंटर, एंड so now you'll see it has started reading the file, and if you notice this, my entire data has been read. तो यहाँ पे जैसी हमें फाइल दिख रही थी, ऊपर सीडो कोड था, स्टेट था, तो दिस इज माई हेडर. एंड बट द थिंग इज ये सब कुछ यहाँ नीचे पेस्ट हो गया है एक हिसाब से, एंड आई कैन नॉट वर्क विथ द पेस्टेड डेटा. तो हेंस व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू स्टोर दिस इन अ कंटेनर. तो अगर मैं इस स्टेटमेंट के सामने, दैट मीन्स इसके लेफ्ट में एक नाम पास करूं जो कि कंटेनर की तरह काम करेगा, इट विल स्टोर दिस डेटा इनटू अ टैबुलर फॉर्म. तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैं नाम देता हूं sample1. तो दिस इज नथिंग बट माई नेम ऑफ माई ऑब्जेक्ट. पर ये ऑब्जेक्ट बनता कैसे है, ये तब बनेगा एक ऑब्जेक्ट जब इसमें मैं एक लेस देन एंड ये डैश इसमें पास कर. दैट मीन्स ये मुझे बता रहा है कि जो भी चीज राइट में है, which is like reading this sample file, will get stored in whatever that left side thing is, which is nothing but my object. तो जो भी ये read.csv function read कर रहा है उस फाइल से, it will store that entire thing into df underscore sample1. This name can be anything. df I use for data frame. Data frame is nothing but a tabular form of data जो हम एक एक्सेल में यूजुअली देखते हैं. सो नाउ इफ आई रन दिस, what it will do, instead of pasting this entire data in my console, it will try to create one object and it will start appearing in my environment section. So now again मैं अपना कर्सर एंड में रखा हूँ and I'll press control enter. So now you'll notice कि मेरी जो फाइल है वो यहाँ पर आ चुकी है. So it is saying my file. Now if I'll click on this will exactly look like my Excel file.
तो एक्सेल में भी वो कुछ इस तरह से ही डेटा दिख रहा था। तो अगर मैं इसको आपको दिखाऊं पूरा डेटा, इट विल लुक एग्जैक्टली लाइक हाउ इट वाज शोइंग मी इन दी एक्सेल फाइल। तो सीडो कोड है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, रूरल है, अर्बन है, असेंबली है, एंड ऑल दिस थिंग्स आर देयर। तो एक थोड़ा सा बैक जाके एक चीज़ कवर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था हेडर इज इक्वल टू ट्रू करने से क्या हुआ कि ये जो टॉप रो थी दैट हैज बिकम माय हेडर और द टाइटल फॉर माय ईच ऑफ द कॉलम, सीडो कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, रूरल, अर्बन इन एवरीथिंग। अगर मैं इसको ट्रू की जगह फॉल्स पास करता, so what will happen is, now what will it will do, it will start considering my first row as part of the data and not actually the title of the each column. So now if I'll run this, and now if I'll open this, you'll see it has given some random names to my columns. You open my v1, v2, v3, something something, and my first row, which was actually my title or the header for the each column, has become part of the data. So that is the difference between passing header as true or false. मान के चलो जैसे मैंने आपको बोला था, अगर मैं इसको पास ही ना करूं, by default it will take header as true. तो अगर मैंने इसको रन किया वापस, and if you'll see this again by clicking on this, you will again see कि it has converted my top row into my headers. सो हमने एक फाइल रीड कर ली है यहाँ पर और उसको एक ऑब्जेक्ट में या एक कंटेनर में हमने सेव कर लिया है। सो द फंक्शन फॉर द सेम इज रीड डॉट सी एस वी। डॉट सी एस वी क्यों यूज़ हुआ? क्योंकि मेरे फाइल का एक्सटेंशन या टाइप जो था वो एक कॉमा सेपरेटेड वैल्यू का टाइप था। प्लीज़ नोटिस दीज माइन्यूट थिंग्स दैट यू नीड टू पास एवरीथिंग अंडर कोट्स, एंड उसके नाम के साथ एक्सटेंशन भी पास करना है। एंड प्लीज़ नोटिस कि यहाँ पे एस कैपिटल है, जो कि मेरी एक्चुअल फाइल में भी एस कैपिटल है। अगर आप, इट इज़ वेरी केस सेंसिटिव, यू हैव टू एग्जैक्टली पास द नेम व्हाट इज देयर ऑफ योर एक्चुअल फाइल। ठीक है, सो वील गो बैक टू आवर डेस्कटॉप एंड सी दैट कि एक तो हमने अपनी डॉट सी एस वी फाइल पढ़ ली। अब हमें देखना होगा कि हमारे पास एक दूसरी फाइल भी है जो कि है हमारी एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टाइप की फाइल। डेटा इज एग्जैक्टली सेम इन बोथ ऑफ दीज, इट जस्ट दैट इसका टाइप इज डिफरेंट। सो तो सवाल ये आता है कि क्या हम रीड डॉट सी एस वी फंक्शन यूज करके इस फाइल को भी पढ़ सकते हैं? द आंसर इज नो, क्योंकि इसका एक्सटेंशन जो है वो सी एस वी नहीं है, दिस इज एक्सेल टाइप ऑफ फाइल। तो इसके लिए हमें कुछ और करना होगा। कुछ और से मेरा मतलब है हमें एक दूसरा फंक्शन पास करना पड़ेगा, दूसरा फंक्शन लाना होगा जो कि इस तरह की फाइल को पढ़ सके। और एक चीज़ कि ये तो मैंने आपको दो एग्जांपल दिए कि CSV एक टाइप हो गया, एक्सेल एक टाइप हो गया, ऐसे और भी तरह की फाइल्स होती हैं। आप अगर स्टेटा में देखेंगे तो डॉट DTA करके एक फाइल होती है, वो एक्सटेंशन यूज़ होता है। डॉट RDS एक फाइल होती है जो R में स्पेसिफिकली यूज़ होती है। एंड देयर विल बी एट टाइम्स you'll observe there are TXT which is text type के फाइल्स, so all those will be there. So as and when they'll come, we'll cover that in our next videos. But for now अभी हम Excel वाली फाइल भी पढ़ के देखते हैं। So this is done. मैंने अपनी sample वाली फाइल पढ़ ली है। My second file was sample2, तो let's say मैं इसको नाम भी sample2 दे रहा हूँ। Also एक चीज़ नोटिस कीजिए, the name which I'm giving, मैं उसमें ऐसे spaces नहीं डाल सकता। The name which I'm giving to my object और even यहाँ path में भी it cannot be broken, मैं यहाँ पे space नहीं डाल सकता। Whatever path was there, I'll have to pass it the way it was, otherwise it will throw an error or it will not. So यहाँ पे आप space देख रहे हैं, this space is there because वो उसके नाम में ही वो space था। मैं अपनी मर्जी से कहीं पे भी एक space introduce नहीं कर सकता। So please honor whatever the way the names are given, otherwise you'll end up in error. Okay, let's get back to the second part where I'm reading my Excel file. तो क्योंकि Excel जो है वो एक बेस R में, आपको याद होगा कि हमने दो चीज़ें डाउनलोड की, हमने R बेस डाउनलोड किया एंड हमने फिर उसके ऊपर R स्टूडियो डाउनलोड किया। तो R बेस के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो फंक्शन है एक्सेल फाइल रीड करने का वो प्रेजेंट नहीं होता है। तो उसके लिए मुझे R को बोलना होगा कि आप
एक लाइब्रेरी के अंदर जाएं और वहाँ से उस फंक्शन को आप निकाल कर लेंगे. So when I say a library, it's nothing but a package. जो पैकेज की हमने लिंक इट बैक टू द इनिशियल फर्स्ट फ्यू स्लाइड्स वेयर आई वाज टॉकिंग अबाउट कि आप और मेरे जैसे लोग बहुत सारे पैकेज बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर यूटिलिटी ऑफ वर्क, कि उनको करना क्या है, उनको किस तरीके के फंक्शंस ऑपरेट करने हैं. तो बाय डिफ़ॉल्ट बेस आर में एक्सेल फाइल रीड करने के लिए एक फंक्शन नहीं है, तो हमें एक लाइब्रेरी कॉल करनी होगी. तो उसके पहले हमें उसे इंस्टॉल करना. सो बाय डिफ़ॉल्ट अगर वो लाइब्रेरी आपके पैकेज में है तो आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है. तो आपके जो भी पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं आर में वो आप इस टैब पे देख सकते हैं जो कि इस सेक्शन में मिलेगा. तो अगर एक्सेल रिलेटेड मुझे फंक्शंस देखने हैं या पैकेजेस देखने हैं तो वो यहाँ पर है कि नहीं है. तो यहाँ पे राइट एक्सेल है, बट अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो ये बोल रहा है कि इट एक्सपोर्ट्स द डेटा फ्रेम्स टू एक्सेल in XLS format. But that's not what we are looking for. We want to read one Excel file. So this is not the function. तो अब सवाल ये आता है कि हम पता कैसे करें कि एक कौन सा फंक्शन या कौन सा पैकेज जो है वो हमारे लिए एक रीड एक्सेल फंक्शन प्रोवाइड कर पाएगा. सो एक बहुत ही सिंपल तरीका है. यू कैन सिंपली डू अ गूगल सर्च ऑन दिस. आपको बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. तो जैसे मैंने यहाँ पे, अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखेंगे तो मैंने ऑलरेडी एक गूगल कर रखा है, पैकेज फॉर रीडिंग एक्सेल फाइल्स इन आर. तो यू विल सी रीड एक्सेल इज़ वन पैकेज which is there which can read the Excel files for me. So now if I'll go back to my RStudio environment, since it is not there in my existing packages, what I'll have to do is I'll have to install that package. मुझे अब पैकेज इंस्टॉल करना है. तो अब the question is whether I should write the command for installing the package over here or where else. तो अगर मैं इंस्टॉल पैकेज जो है एक फंक्शन अपने स्क्रिप्ट का पार्ट बना देता हूँ, दिस इज माई स्क्रिप्ट वेयर आई एम राइटिंग द कोड, तो वो हर बार रन होगा जब मैं इस स्क्रिप्ट को रन करूँगा. बट एक इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है बस वो एक ही बार होने की ज़रूरत है. दैट मीन्स यू नीड नॉट टू रिपीट installing the package every time you want to use it. So install package is like bringing it to your R environment once and it will be there till the time you're not uninstalling it. तो इसीलिए ताकि हम repeat installs ना करें, we can write that command over here in our console part. So if I'll write install, so it is suggesting me multiple options. So यहाँ पे आप देख सकते हैं install.packages is one function which will install that package for me. तो हमने जैसा कि अपने ब्राउज़र में देखा था, रीड एक्सेल इज़ द फंक्शन. तो यहाँ पे मैं इसके अंदर द आर्ग्यूमेंट विच विल टेक इज़ द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पैकेज. तो द नेम ऑफ द पैकेज इज रीड एक्सेल एंड सिंस इट इज़ अ नेम आई हैव टू पास इट विद इन द कोट्स. तो यहाँ पे मैं रीड एक्सेल जो है वो कमांड पास कर दूँगा एंड यहाँ पे मुझे कंट्रोल एंटर दबाने की ज़रूरत नहीं है. आई कैन सिंपली प्रेस एंटर एंड इट विल इंस्टॉल द package for me. So give it some time and till the time it is telling you that it has successfully unpacked. So now it has run. So now if I'll check in my packages, I can actually see read Excel is there. So now it has come to my installed packages. तो जैसा मैंने कहा कि ये एक सिर्फ वन टाइम प्रोसेस है, इसलिए मुझे उसे दोबारा इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा. तो नाउ द थिंग इज कि अब मैं उस पैकेज से वो फंक्शन निकाल के लाऊं जो मेरी एक्सेल फाइल को रीड कर पाएगा. सो क्या होता है कि जब भी आप आर स्क्रिप्ट में एक पैकेज को बुलाना चाहते हो, देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड लाइब्रेरी. तो मुझे बताना होगा कि एक लाइब्रेरी एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है रीड एक्सेल. आपको वो इस एनवायरनमेंट में लाना है और वहाँ से एक फंक्शन निकालना है. So this is nothing but a recall. So let's understand this. I'll go back to my browser over here. So there's a recall activity which is happening. So first thing we did is install. We installed a package. Now
there's a recall which is happening. Recall is nothing but the reminder to my R Studio कि एक package है, you bring it to the current session, which is my, right now it is my read Excel package. तो आप इसको अभी के सेशन में लेके आएं एंड अलाउ मी टू यूज द फंक्शंस विच आर देयर इनसाइड. तो अगर आप लाइब्रेरी ये फंक्शन नहीं लिखते हैं, सो दिस recall will not happen. This recall which you are talking about, so it will not remember कि मेरे पास एक पैकेज है, एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर एक फंक्शन होगा जो कि मैं यूज़ कर सकता. तो अगेन आई गो बैक टू आवर स्टूडियो. So that recall function is my library function. So yeah, please remember I'll have to run this before using any functions which are inside it. तो मैंने अपना cursor इसके end में रखा, I press Control Enter. So it is giving me some warning, but that's okay. You don't need to worry about it. Okay, so now this is my object which I was trying to work with. और again मुझे ये arrow less than and dash which will signify whatever is on the right side of this arrow will get filled in this object. So अब मैं if I'll slowly type read and I'll say Excel, so it is giving me a function read Excel, and also उसके सामने अगर आप देखेंगे it is mentioning me the name of the package which is nothing but my read Excel package. So this is the function which I can use. So I'll choose this and the name of my file, just try to guess like what should I write. Yes, it is my sample2, but the extension is XLSX. Please notice जो मेरी sample1 फाइल थी उसका extension था .csv, but for this one it is .xlsx. and simply इसमें भी header pass करने की ज़रूरत नहीं है. rather ये if I'll do an F1 on this, you will see ये header एक argument लेता ही नहीं है. So if you will see it takes a path or the name of the file, and it doesn't take header as one of the argument. So and rest of the arguments are not really necessary for me. So what I'll do a Control Enter. Now you can see this is my sample2. if I'll broaden this, this is my sample2. if I'll click on this, my number of objects and this variables are same, and this is the exact same data. So it has read my sample2 file as well. So this was about setting the working directory and reading the files. Like I said, there can be multiple more type of files. The two of which we spoke about, we discussed, are CSV and .xls. One thing to notice is जो यहाँ पे tabular data इसने object में read किया है, it is giving me two numbers. Just try to guess what those are. And the answer is this bigger number 92,690, and it is followed by OBS, which is nothing but observations. So in a way, this file has total 92,690 observation or my rows. So if you'll see, जो horizontally होते हैं वो मेरे rows होते हैं. If I'll go to the end, the last one is 92,690. So these many observations I have for this particular data set, and 54 variables. Those are nothing but the column हैं. Those variables, those are called my variables. So I have 54 variables and 92,690 observations. So data मेरे पास 92,690 schools का है, जो कि केरला और कर्नाटका स्टेट कंबाइन करके मैंने इधर सबसेट किया हुआ है. So this is how I'll read it. Okay, moving further, we have covered reading both the files. We have spoken about our environment and hard disk space. We have covered setting the working directory. We have covered there are different types of files and how do we read them. And we have covered functions and objects. For this thing, I'll tell you something. There's a very easy way to identify a function and identify an object. So if I'll go back to my browser, this is important to cover because you will come across many functions and many times you'll be creating so many objects. So एक function क्या है? एक function is nothing but it's a command which is doing something for you. So जैसे read.csv जो हमने एक function use किया था, या फिर read_excel.
was the function. कोई भी इस तरीके के आपको स्टेटमेंट मिले विच आर फॉलोड बाय दिस पेरेंथेसिस, जिसको आप स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं, अगर वो आपको मिल रहे हैं तो प्लीज नोट दैट दैट थिंग इज नथिंग बट अ फंक्शन फॉर यू. सो यहाँ पर भी आपको पेरेंथेसिस हमने लगाए थे, एंड इट इज टेकिंग सम आर्ग्यूमेंट इनसाइड इट, सो दैट्स नथिंग बट अ फंक्शन फॉर यू. और ऑब्जेक्ट हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? अगर कुछ भी चीज़ लिखी हुई है ABC, जहाँ पर हम df अंडरस्कोर समथिंग समथिंग यूज कर रहे थे, इफ इट इज फॉलोड बाय दिस एरो एंड whatever is written this side, so always the left side is an object for you. प्लीज नोटिस इसके बाद कोई भी parenthesis नहीं लगा होता है. It is followed by this arrow sign, or an object is nothing but a container which will hold some data for you temporarily. So yes, so this was important, hence we covered this. Now we can go back to our main session, and here, so we have covered this. Next part is usage of this dollar sign. So now that we have read the data, our environment, how do we access different fields? So for example, if let's say I'm working with my first file, and it has multiple fields like pseudocode, state, district, rural, urban, and so many things, school category, management, pin code, some year, shift school, medium of instruction, and many more things. So let's say I'll pick up a continuous variable. When I say continuous variable, that is not a category, and mathematical operations are possible on it. So let's say मुझे देखना है कि let's say instruction days, PR stands for primary, in the state of Kerala and Karnataka, what is the average number of instruction days in primary? If this is what my requirement is, how will I do it? So to access that particular column, this is my name of the column, and it is present in my sample1 object. So if I need to access that particular column, what I'll do, I'll write the name of my object, which is df sample1, and I will use the dollar symbol on my keyboard, and I'll start slowly typing the name of the column. So here it was instructional days primary. So now what it is doing, what I'm telling my R is, you pick up this entire object which has my sample1 data, and you access by using this dollar symbol. I'm asking it to access this particular column only, this particular variable only. So now if I'll run this, it will start printing all 92,690 objects, or the values which are present in this variable. So those are nothing but, in each school, how many number of primary instruction days are there. So if I'll run this, you'll see it has printed that entire thing. So below in the console section, whatever the values are there. So let's say I want to know what are the mean, or what are the average number of instruction days in both Karnataka, and combining both Karnataka and Kerala. So you all might know mean stands for the average. So mean is a default function which is present in the R environment, and you can select this, and I can simply pass this entire thing over here, which is like, in this particular data frame, access this particular column and give the mean for me. So if I'll run this, it will give me a single value now below. So now you'll see it has given me that there are 129.21 average instruction days combining both Kerala and Karnataka. So likewise, there are many other functions which you can use. Median is the 50% value which you can access. Again, I'll pass this same thing here, and it will give me the median. So there are 200, the 50% of the schools have 200 instruction days in primary section. So this is the use of this particular dollar sign, that I can actually access a particular column in the entire data set. So this particular
डॉलर सिंबल इज़ वेरी वेरी यूजफुल, क्योंकि हम जो भी करने वाले हैं अब आगे के सेशंस में आर में, दोस विल बी द प्राइमरी यूसेज दैट विल हैव फॉर दिस डॉलर साइन. नाउ फाइनली व्हेन वी आर डन राइटिंग द कोड, ये स्क्रिप्ट हमें सेव करनी होगी ताकि हम इसको दोबारा यूज़ कर सकें. सो राइट नाउ यू कैन सी इट्स titled as untitled 7 and some star and it's in red. So please notice जब भी ये red में हो, that means whatever work that you have done in your script, that has not been saved yet. So what you can do, you can, this floppy button which you can see, you can click on, either you can click on this or you can on your keyboard press Ctrl save S. So that will save the file for you. So right now I'll click on this. It will prompt me कि ये कहाँ सेव करना है. अगेन मैं सेम फोल्डर में यूज़ करना चाहूँगा. एंड या सो द फाइल नेम विच आई गिव इज, लेट्स से कुछ भी मैं दे सकता हूँ. एंड आई गिव द एक्सटेंशन एज .r. ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो भी स्क्रिप्ट आप सेव करेंगे वरना वो एक टेक्स्ट की तरह बन जाएगा. .r गिव्स आर द आइडिया कि मैं इसको डायरेक्टली अगर मैं डबल क्लिक करूँगा इस फाइल पे, दैट विल डायरेक्टली ओपन इन माई आर स्टूडियो. सो हेंस आई विल गिव माई नेम plus the extension .r and I'll click on save. So once I've done it, you'll see the name has been changed to whatever name that I've given. And now if I'll make any changes to it, again it will turn red and it will say there are some unsaved changes. Now what I'll have to simply do is click on this floppy button and not rename it every time. So I'll just remove this extra thing and then I'll save it. All right. So this is how I'll save my file. And to access it the next time, what you'll have to do, you'll have to go to your folder location where you have saved this file. So now you can see it is coming as first program, first_r_program. You'll notice that there's a RStudio symbol next to it. So if I'll let's say if I'll close my RStudio, I'll go back here and I'll directly click on this first program, it will open directly in my RStudio environment. Now to synthesize everything that we have covered today, let's just go through the script that we have written. So अगर आप शुरू से observe करेंगे, we started with this function called setwd, which stands for setting working directory. So this is the first thing which we do so that we can interact with the hard disk drive space for all the files that we have in our system. तो important thing to note is कि ये जो path है, जो argument setwd लेता है, it has to be under quotes. It can be single quote or double quote either. And another thing is these slashes, initially जब आप path copy करेंगे वो backslash आएगा. You'll have to convert that to forward slashes. And this is important because R will not understand कि ये path correct है या नहीं है. Also the name of the path should be exactly what it is. You should not introduce अपने आप से कोई spaces in this one. That's important. Another thing, like once you run this, getwd is the function which will tell us whether our path has been set correctly or not. So it does not take any argument. Then further moving on, read CSV is another function that we read. And also just try to recall that to recognize any function, you'll see it is followed by these parentheses. तो अगर किसी चीज़ के बाद parentheses लगा हुआ है, that means that's a function, or that will take some argument in it. Apart from that, arrow जो ये हम बनाते हैं, which is less than and then a dash, इसके left में जो भी होगा, that will be our object. That means whatever is happening on the right side will get stored temporarily in the R environment like this into this object या container. Then further we talked about this package. Again package मैं वापस repeat करूँगा, is a bundle of code जिसके अंदर बहुत सारे functions होते हैं अलग अलग utility के लिए. तो यहाँ हमारी utility थी कि हम एक Excel फाइल को पढ़ सकें, और उसको हमने कैसे पढ़ा, हमने एक पैकेज यूज़ किया रीड एक्सेल. तो हमने पहले चेक किया था कि हमारे पैकेज में वो अवेलेबल नहीं था, पर अब वो है. अगर वो अवेलेबल नहीं होता तो हम इंस्टॉल डॉट पैकेजेस जो फंक्शन है उसको यूज़ करते हैं. इसके अंदर हम विद इन कोट्स जो भी हमारा
पैकेज है उसका नाम पास करते हैं एंड वी रन इट. इंस्टॉलिंग इज वन टाइम एक्टिविटी, इसलिए वो स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं होगी. दैट यूल राइट इन द कंसोल पार्ट, वरना वो हर बार इंस्टॉल करने की कोशिश करेगा. Library function is the recall function to let our environment know that yes, we have a package of the name which we are passing inside this function, and please try to remember it and try to recall it, and so that we can use all the functions which are there inside this particular package. तो इस पैकेज के अंदर से हमने जो फंक्शन यूज़ किया है वो read_excel फंक्शन यूज़ किया है, और अगेन इट टेक्स द आर्गुमेंट of the file name or the entire path. Again, this is another object. Please remember कि आप जब भी एक फाइल का नाम दे रहे हैं, it should always be followed by the correct extension. For example, अगर मैं यहाँ से ये .csv हटा दूँ, it will throw us an error. So यहाँ पे आप देख लेंगे, तो यहाँ पे ये बोल रहा है no such directory or file found. Hence, it is needed that कि हम ये extension हमेशा रखें, वरना you will end up in the error. Then we spoke about this dollar function. That means अगर हमें कोई specific column या specific variable set से use करना है, तो हम इस dollar symbol से उसको access कर सकते हैं. Then there were some inbuilt functions which we use to operate on these particular variables. So this is what we have covered. Please practice more, and before the next session I will recommend you to download the data, that UDICE data for Karnataka, Kerala, and maybe Odisha state, even Madhya Pradesh, and so that it will become easier for you to follow at that time. All right, if you have any questions, feel free to comment under this video and we will try to answer them. Okay, so now my time is done. Now I have something for you to practice now. So you will get exactly 15 seconds to solve this, and you can start now. Just try to guess. Okay, your time is up, and I hope you have gotten the answer, which of the following, but yeah, I can also understand that 15 seconds were pretty less. You can always pause the video and you can cheat and you can, answer it. So let's go one by one. Let's consider the first case. So this is how I'm setting my working directory. So isme what problem did you identify, if there was any? So if you could actually see this is still a backslash. Like I told you session के बीच में कि in R it will not recognize this as correct path. You'll have to have forward slashes. So यहाँ पे ये problem है, so this will not work properly. Example 2, I've spoke about कि spaces नहीं होना चाहिए unless those are actual the name spaces. So यहाँ पे मैंने खुद से ही एक space introduce कर दिया, even though my forward slashes are correct. यहाँ पर this will not work because this has an additional space in between. In this one, end में एक space introduce हुआ है, which is not fine, and this will not work. And finally, what is the problem with this one? The problem is it is not within the double quotes, जो कि बाकी 3 cases में है, but इस case में नहीं है. So none of these will work properly. So I hope you might have understood. Try this one. So let's say again, I'll fix a timer for you. Your time starts now. All right, time's up. So let's see one by one. What is the problem with this one? The problem is I've not passed the extension along with the name. So sample1.csv मुझे लिखना था, और header true मैं दूँ या ना दूँ, that's okay. This is not the issue. The issue is यहाँ पर .csv मैंने pass नहीं किया. Second one, same problem, I have not passed .csv यहाँ पर, hence this will not work. Third one, even though I'm using the function as read.csv,
पर मैं फाइल कौन सी रीड कर रहा हूँ, मैं एक XLS टाइप की फाइल रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ. So this is not the function for reading an XLSX type of file. So this will not work. And the final one, this seems perfect, correct, but like I told you, read dot underscore XL या XLS में header कोई argument नहीं होता है, hence this will not work. All right, I hope this was helpful for you in understanding the basics of R. This is an exercise for you. Please set a working directory from wherever you have stored your, created your folder in. Set that as the working directory, and also read the 2 sample files which I have provided in the description of this video. सो आई होप आपको ये सब काफ़ी समझ आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, एंड दिस वॉज रियली हेल्पफुल. विद दैट होप, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, which will be based on some advanced function using dplyr package. So now we'll cover the entire dplyr formulas or the functions that are there in it. See you. Bye.